गाइस आज का टॉपिक है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो डिप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डिप्रेशन इज अ अफेक्टिव डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय सैडनेस ऑफ मूड, पॉवर्टी ऑफ आइडियाज एंड साइकोमोटर रिटार्डेशन। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मीन्स द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ डिप्रेसिव। तो ईटियोलॉजी की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक डिप्रेशन का अननोन है। कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि जनरली ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन फैक्टर्स काम करते हैं, जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल। ये चारों फैक्टर्स कॉम्बिनेशन में काम करते हैं और एग्जैक्ट कॉज अननोन है। अगर बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की तो अगर बात करें बायोलॉजिकल फैक्टर्स की तो कुछ सर्टेन न्यूरो होते हैं जो कि सिनेप्टिक क्लेफ्ट में पाए जाते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसे सिनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। जो यहाँ पे जो न्यूरो या केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं या कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, इनको न्यूरो बोलते हैं। तो जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जो यहाँ पे न्यूरो हैं, अगर यहाँ पे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन अगर यहाँ पर उनका लेवल अगर इंक्रीज रहेगा तो वो वर्क करेगा एंटी डिप्रेसेंट की तरह। ओके, अगर यहाँ पर सिनेप्टिक लेफ्ट में सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन और डोपामाइन का लेवल इंक्रीज रहता है सिनेप्टिक लेफ्ट में, तो वो एंटी डिप्रेसेंट की तरह कार्य करता है। तो इसको एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज़ किया जाता है। एंटी डिप्रेसेंट आपने सुना होगा SSRIs इज सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सो यहाँ पे सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन को रीअपटेक करने से ये रोकता है, मीन्स ये सेरोटोनिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। ये तो जब ये केमिकल सेरोटोनिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और वो एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। ओके, सो इन तीनों सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इन तीनों मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम दिया जाता है। इन तीनों को मोनोअमाइन्स डेफिशिएंसी थ्योरी की भी एक्सप्लेन करती है कि ये तीनों मोनोअमाइन की अगर डेफिशिएंसी होती है तो डिप्रेशन हो जाता है। तो ये मोनोअमाइन क्या होता है? मोनोअमाइन डेफिशिएंसी थ्योरी क्या है कि जो मोनोअमीन्स होते हैं, मोनोअमीन्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन तीनों सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इन तीनों की केमिकल अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो उन तीनों में अमीन ग्रुप पाया जाता है। अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको मोनोअमीन कहते हैं। इसलिए मोनोअमीन डेफिशिएंसी थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है इस तरीके से। डिप्रेशन इज 3 डिग्रीज ऑफ डिप्रेशन। फर्स्ट इज माइल्ड, सेकेंड इज मॉडरेट एंड थर्ड इज mild, moderate and severe. In mild, there will appear two core symptoms and two other symptoms. Other symptoms we studied and two core symptoms are out of three core symptoms. I will explain you three core symptoms. First is decreased mood, second decreased interest or enjoyment, and third is decreased energy. Okay, so these three core symptoms, out of these three, two will appear in mild and moderate, and all three core symptoms will appear in severe type of clinical depression. And other symptoms will appear as well. Other symptoms are like decreased attention, concentration, decreased confidence, decreased self-esteem, ideas of guilt, ideas of suicide, and decreased sleep, decreased appetite, and all these. And some somatic symptoms also associated with these symptoms like decreased weight or decreased libido, psychomotor changes, early morning awakening, all this. Okay, now talk about, okay, let's see symptoms in teens. In teenage group, if there is depression, then these symptoms will appear: anger, feeling negative and worthless, poor performance or poor attendance at school, and feeling misunderstood, and extremely sensitive behavior will be seen. And in older adults, memory difficulties, physical aches or pain, sleep problems, loss of interest in sex not caused by a medical condition or medication, loss of interest in socializing and in activities, suicidal thinking or feeling, especially in older men. Okay. Here are some related psychiatric conditions shown. Related psychiatric conditions like anxiety disorders, schizophrenia, eating disorders, somatic symptoms disorder, normal reaction to a life loss, drug and alcohol use, prescription drug use like steroids, antihypertensive. So the neurotransmitters like serotonin is also associated with OCD or obsessive compulsive disorder. We will study later videos. And norepinephrine is associated with anxiety and attention. So
its level will cause its decreased level will cause anxiety and attention problems. And dopamine will cause some attention problems and motivation and pleasure problems. So this is a mood affective disorder. So many terms associated with this disease, and first is anhedonia. Anhedonia is a loss of interest or pleasure in almost all activities. So this is asked in many exams, many competitive staffness exams. What is anhedonia? So anhedonia is loss of interest or pleasure in almost all daily activities. Okay. Now next is treatment. So treatment is basically divided into two: non-pharmacologic and pharmacologic treatment. Non-pharmacologic and pharmacologic. Non-pharmacologic treatment include physical activities, diet plan, and main psychotherapy. So psychotherapy or talk therapy is really very effective in depression. And in pharmacologic, we use antidepressants like SSRIs, MAOIs, monoamine, oxidase inhibitor, and tricyclics. We study further, and in severe depression we use ECT or RDMS. Okay, let's talk in detail. Psychotherapy or talk therapy is a common term for treating depression by talking about your condition and related issues with the mental health professional. Okay, so by talking or by counseling of a patient, we can find a cause of depression and can cure. Then selective serotonin reuptake inhibitor, SSRIs, as I told you before, generally used fluoxetine and sertraline. How this work I already explained you, that in synaptic cleft they increases the level of serotonin. Okay, so serotonin level they will increase in synaptic cleft because they stop the reabsorption of serotonin. So automatically here in synaptic cleft serotonin amount will be increased and depression will be cured, or this will act as a antidepressant. Next is imipramine or some tricyclic antidepressant. Usually imipramine used in recurrent depressive episode, generally in recurrent type of depressive episode. Other treatment options are ECT is used in depression to impact the function and effect of neurotransmitters in the brain. And next is transcranial magnetic stimulation. RDMS uses magnetic pulses to stimulate nerve cells in the brain that are involved in regulation of mood. So this is RDMS.